Hello students, welcome to CATCH25 Science Academy YouTube channel. This is Preetesh Mishra. I welcome all of you. If you have already subscribed to this channel, thank you very much for your love and support. If you haven't, and if you are Cbse class 10 students, you must quickly subscribe this channel. Why? Answer is because I am coming up with video wise चैप्टर के रिवीजन, जहां पे हर वीडियो में एक चैप्टर का मैं रिवीजन कराऊंगा. अब तक स्टूडेंट्स मैंने 3 चैप्टर रिवीजन आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, जिनमें लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस एंड देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट मैंने कवर कर लिया है स्टूडेंट्स. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से मैंने सिर्फ हेरिडिटी पार्ट को कवर किया है बिकॉज इवोल्यूशन पार्ट हैज बीन डिलीटेड for this year's syllabus of your boards thanks to COVID. Okay, now in this video I'm going to come up with the chapter which is our environment. So environment के ऊपर क्या-क्या चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. आप पेपर सॉल्विंग के पहले आपको environment chapter क्विकली कैसे रिवाइज करना है, rather than reading entire chapter from your textbook, आप आराम से इस वीडियो को सुन के पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. So let us quickly start with this chapter, students. Our first slide would be ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem means all living organisms living in a particular area plus their abiotic factors, their abiotic neighbors, non-living things जो भी होते हैं plus living things in a particular area together they form ecosystem, students. As you can see on the screen also, ये सारे living organism, tadpoles, fly, and then I include frog also in that, snail, ये सारी चीजें also you include plants, students. इन सब को, fish को, if I keep on including them, these are all biotic components of ecosystem. You can see in this table also. And then when I start including sunlight, when I start including water, when I start including soil, all these components which are part of abiotic factors will together combine to form an ecosystem. Next, students. Next आपको क्या दिया इस चैप्टर में? They have explained you a general food chain. Food chain मतलब क्या होता है students? Now पूरे ecosystem में because you have number of living organisms, they will have to feed upon something, right? उनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, एनर्जी के लिए भी तो कुछ चाहिए. So एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी स्टार्ट होता है इस लेवल से students, that is producers. So who are producers? हमको इससे अच्छा आंसर नहीं आता है. आंसर is green organisms, green plants, students. So जो green plants होते हैं, apart from plants we also have certain bacteria which can produce their own food. They can form, they can manufacture their own food. But especially I'll take over here green plants को मैं लेता हूं and I'll go ahead with the example. Green plant, students, with the help of a process known as photosynthesis, they will use sunlight, they will use chloroplast present inside them, they will use water, and they will use CO2 from the atmosphere to produce carbohydrates, complex sugar, and also simple sugar you can say. They will utilize some amount of this sugar by them, okay, something will be utilized by them, and then remaining would be passed on to the consumer, students. So consumers में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आता है primary consumer, जो सबसे पहले उस प्लांट के ऊपर, उस प्लांट को एज अ खाना, उस प्लांट को खाएगा टू डिराइव सम एनर्जी. अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने का काम किसका है? सेकेंडरी कंज्यूमर का है. सो ये सेकेंडरी कंज्यूमर बेचारा कहां से एनर्जी पाएगा? ये तो प्लांट को नहीं खाता. आपने देखा है कभी फ्रॉग प्लांट को खाता है? कभी नहीं खाता. सो फ्रॉग का खाना कौन हुआ? ये हुआ. सो डेफिनेटली जो एनर्जी ग्रासहोपर ने प्लांट से चुराया उसका सम पार्ट फ्रॉग ग्रासहोपर को खा के चुरा लेगा. नाउ ग्रासहोपर से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किसके पास जाती है? स्नेक के पास. सो हम स्नेक को कौन से लेवल पे रखेंगे? फ्रॉग के बाद. I'm so sorry, फ्रॉग के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी चली जाएगी स्नेक के पास, बट एंटायरली पूरी की पूरी एनर्जी नहीं जाती है. कितनी एनर्जी पास ऑन होती है फ्रॉम वन कंज्यूमर टू द नेक्स्ट कंज्यूमर? आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड, स्टूडेंट्स. सो फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाते हैं. स्नेक को कौन खाएगा? विल गो अहेड टू द नेक्स्ट कंज्यूमर व्हिच इज हॉक इन दिस केस. एंड देन जब हॉक मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करना, उसकी पूरी बॉडी को तोड़ना, खुद का भी न्यूट्रिशन लेना एंड सॉइल में भी न्यूट्रिशन डाल देना, ये किसका काम है? decomposers का काम है. So this is very simple example of a food chain, students. And at every step you can see this red arrow, it is indicating energy is getting transferred from one element to the other. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ योर इकोसिस्टम, डू नॉट नीड एनर्जी टू सर्वाइव, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स need energy to survive. Why, students? Because living organisms do metabolism है उनके अंदर, and metabolism के लिए energy we need. Okay, next पे जाते हैं students. Now
ओवर हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स की डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको दिया गया है, ठीक है। आपके बुक से डायग्राम मैंने नहीं पिक किया है, आई पिक्ड इट फ्रॉम इंटरनेट। आपके बुक में जो डायग्राम दिया है दैट आल्सो यू कैन यूज, बट ओवर हियर आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, एंड जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना बना लेते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे अब्सॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ सनलाइट का भी कुछ अमाउंट ही वो लोग अब्सॉर्ब करेंगे, वो अमाउंट को अब्सॉर्ब करके वो लोग खुद का खाना बनाएंगे। इनफैक्ट इज 1 to 10% इन सर्टेन टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, इट इज वेरी लेस देन 10% आल्सो। सो ये जो इन्होंने एनर्जी बना ली, जो खाना बना लिया, उस खाना का कितना परसेंट नेक्स्ट लेवल तक गया, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर कितना खाना, कितना एनर्जी ले पाएंगे। अगर प्लांट ने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनाया तो ओनली 10 मॉलिक्यूल्स पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एंड देन बाकी क्या हो गया, बाकी एनर्जी विल बी लॉस्ट स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर्स एनिमल्स। सो उनसे कहां जाएगा, उनको कौन खाएंगे, कार्निवोर्स खाएंगे, राइट है। सो दिस इज नेक्स्ट लेवल। अब इस लेवल पे भी कितनी एनर्जी गई, ओनली 10%। सो अब इसको कितना एनर्जी मिला था, अगर मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से जाऊं तो यहां पे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी सपोज बने थे, उनमें से 10 इसके पास गया। अब उस 10 का 10% which is 1 इसके पास जाएगा। अब उस 1 का 10% which is 0.1 इसके पास जाएगा स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग इट वेरी नाइसली, है ना। सो क्या हो रहा है, हर एनर्जी लेवल के ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है उसको सिर्फ 10% मिलेगा अपने नीचे वाले से, एंड दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है आपसे, दे आस्क यू व्हाई फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स। Why does this happen? Because only simple answer इसका है students, because very less energy, very less amount of energy is transferred. So इतने less amount of energy में बहुत ज्यादा organism जिंदा नहीं हो सकते। Therefore, food chain will include only 4 to 5 members. That's it. Okay, next question students. Now what is difference between these two terms, food chain and food web? As you can see, food chain students, you have limited number of members over here. One by one energy is getting transferred to the next consumer from the producer who's sitting at the bottom of the chain. But if I move my eyes over here, now over here students you can see multiple arrows starting and ending over different members, which shows that क्या बताता है, चेक करो आपके टेक्स्ट बुक में क्या लाइन दिया है। They've said each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms, or they are fed upon by several other organisms. So instead of straight line, that is food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called as food web. So food web is more appropriate representation of the ecosystem relationship which is existing. Okay, next students. Now what is biological magnification? Magnification मतलब क्या, ज्यादा हो जाना, बड़ा हो जाना। That means it is due to accumulation of chemicals over here. आप मैग्नीफाइंग ग्लास को तो जानते ही हो, कैसे एक छोटी सी चीज मैग्नीफाइंग ग्लास में बड़ी नजर आने लगती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो केमिकल्स हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, these chemicals go and accumulate in certain resources. Like for example, कोई केमिकल्स जो वाटर में जाके जमा हो जाते हैं, and if they are not degradable very easily, then these chemicals through water, through soil, they gain entry into the producers or primary consumer level. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट में चले गए थ्रू सॉइल या थ्रू वाटर, तो ये जो केमिकल्स होते हैं, ये देखो 2 ppm इनका भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और जमा हो जाके होके जब यहाँ पे आएंगे तो और एक्यूमुलेट होके इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, 5 per million 5 हो गए ये लोग, एंड देन ग्रेजुअली व्हेन दीज एलिमेंट्स आर एक्यूमुलेटिंग, जमा होते होते इस लेवल पे 200 हो गया, एंड बाय द टाइम ह्यूमन बीइंग सपोज अगर इनको कंज्यूम करते हैं तो उनको यही एलिमेंट्स उनके बॉडी में चला गया, एंड लुक एट द कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स। सो दिस इज identifying that certain chemicals keep on accumulating in the energy flow diagram, in the food chain, in the food web, and these chemicals can be very dangerous. So this concept of accumulation of the chemicals is known as biological magnification. Why biological? Because living beings are involved.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये टॉपिक आपको डिस्कस किया गया। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, इसको आपने बहुत बार अब तक पढ़ा होगा, इनफैक्ट आपने अपने ईवीएस प्रोजेक्ट्स में भी इसके ऊपर काम किए होंगे। सो व्हाट इज दिस टॉपिक? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स। पोल्यूशन हम बहुत लंबे स्केल पे वी कैन डिस्कस, बट ओवर हियर दे हैव डिस्कस्ड ओजोन लेयर, ओजोन फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इन दिस डायग्राम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ ओजोन फॉर्मेशन हैपेंस एक्चुअली। सो व्हाट इज ओजोन फर्स्ट ऑफ ऑल? O3. What is oxygen? O2. So now, because of the sunlight, radiations will break O2 into oxygen atoms over here. One of the oxygen atom over here combines with the O2. Oxygen atom combines with the oxygen molecule to form ozone. Now, what is ozone exactly? It can be very dangerous, but it can be very useful also. At which level? Ozone is very, very useful as a layer to prevent UV rays reaching to you. ओके, जो यूवी रेज आते हैं सन से, वो रेज आप तक ना पहुंचे, अगर हम तक पहुंच जाए तो हमको कैंसर भी कॉज कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, बहुत बहुत हार्मफुल है यूवी रेज। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये लेयर पूरा, दिस इज ओजोन लेयर, अंडरस्टूड? सो ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर एक रेनकोट की तरह, यहां पे मैं उसको बोलता हूं रे कोट, रेस को हम तक नहीं आने देता, कोटिंग कर लेता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। बट यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो CFC गैस निकलता है, these gases actually harm the ozone layer। अगर ओजोन लेयर जो इतना काम का है हमारे लिए, अगर हमने उसको ही हार्म पहुंचाया, उसको ही किल कर दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यूवी रेज विच आर हार्मफुल टू अस, अब उनको रोकने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे यूवी रेज, ओजोन नहीं है, ओजोन लेयर, इस वजह से यूवी रेज नीचे आ गए एंड देन दे आर गोइंग टू हार्म अस। So that is the importance of ozone layer, which is must for us. It should be protected. Next and the last point in your chapter is they have discussed about biodegradable and non-biodegradable materials. Now this discussion is not extensive in your textbook students, बहुत ही short में discuss किया है, but what do they mean to convey over here is certain materials you can see in your picture also, certain materials are degradable, यानी कोई चीजें टूट जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी आसानी के साथ, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल नॉट डिकम्पोज इजीली। आपने बहुत बार न्यूज पे भी देखा होगा कि किसी काऊ का ऑपरेशन किया और ढेर सारे, आई हैव इवन रेड 60 to 90 kg ऑफ प्लास्टिक्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनिमल्स। सो इमेजिन करो, वो एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं उनको थोड़ी पता क्या प्लास्टिक है, क्या बायोडिग्रेडेबल है, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग एवरीथिंग, and in the process these plastics go and accumulate in their body, which can be very, very harmful. It can inhibit certain physiological procedures which can harm the life. It can also endanger the life of that organism. So this is what have been discussed. This has been discussed in the last part of your chapter, students. That's it. The chapter is very, very small. In fact, I should say just 8 to 9 pages of actual content is present in the textbook for this chapter. It is very, very simple chapter. You can go through this chapter, solve it. This is highly scoring chapter. Thank you very much. And I'll repeat, if you have not subscribed to this channel, do subscribe to it. We are coming up with many more videos, students. Also share the links with your friends so even they can enjoy this quick revision of all the chapters of CBSE class 10 students. Thank you very much. All the best.